Before we proceed, I would like to acknowledge that Ms. Zafine will be leaving the session earlier due to personal commitment. I sincerely thank you for sharing your valuable time and insight with us today, ma'am. Thank you so much. And thank you for having me. And everybody else, thank you so much for your insightful views. And hope to connect with you another time, another place. Thank you. Khudafis. Nafis. Let's move forward. Mr. Harris, I have a question for you. Mr. Harris, how can community based legal awareness be used as a preventive tool so that people know their rights before they experience harm in healthcare settings? तो मुझे लगता है मैं तो काफी बातें कर चुका हूँ, और अगर मैं बीच में जज्बाती हो जाऊं तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो मैंने बहुत ग्राउंड रियलिटीज देखी है बहुत यंग एज से। तो अभी मैंने रिसेंटली आईओएम यूनाइटेड नेशन के साथ काम किया, और जब मैंने उनके साथ काम किया और मैं गांव डोर टू डोर गया और मैंने हालात देखे, तो मतलब मैं रोना नहीं चाहता इस सेशन में, मुझे लगता है माहौल खराब हो जाएगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि बच्चे कितने बुरे हालात में पड़े हुए हैं जमीनों पर। वो लिटरली, अब मैं नहीं समझा पा रहा कि उस बच्ची ने रोटी उठाई जमीन से जिस पर कीचड़ लगी हुई थी, और वो रोटी खा रही थी। तो अगर मैं इस पावर्टी में उन्हें कहूं कि आओ आपका केस मैं लड़ने जाता हूँ, आ जाए आपका केस मैं लड़ता हूँ कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो वो कहेंगे पहले हम खाना तो खा लें। लाइक, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, और मैं इतना बुरा फील कर रहा हूँ कि वो मुझे ऑफर कर रहे थे उसी रोटी से कि आप भी थोड़ा सा खा लो, और मैं वो खा नहीं पा रहा था। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस है। उसके बाद आ जाती है बातें मीडिया की कि हम करेंगे अवेयरनेस, हम करेंगे ये। कौन अवेयरनेस करने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रही। जिस न्यूज चैनल को मैं खोलूं वो अपने एजेंडे के साथ बैठे हुए हैं। अब कौन अवेयरनेस करेगा? अब मैं जिस गांव के नाम लूंगा उस गांव पे कभी मीडिया गई ही नहीं है, उस गांव पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो वहां मैं जाकर अगर लीगल अवेयरनेस कर भी दूं कि आपके लिए मैं केस लड़ूंगा, आपके लिए आपके साथ मेडिकल ज्यादती हुई है, तो वो कहेंगे हमें पहले ये तो बताओ कि डॉक्टर और नर्स में क्या फर्क है, पहले हमें ये तो बताओ कि खाना कब मिलेगा हमें। लिटरली वो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप लोग जो क्वेश्चन करने आए हैं, आप ये जो सर्वे करने आए हैं हमसे, क्या आप हमें खाना देंगे? मुझे अपने भाई के लिए लेके जाना है। तो अब मैं उस बच्चे को क्या कहूं कि नहीं आपको गलत टीका लगा हुआ है, आपको मैं डॉक्टर के पास, आप उस डॉक्टर के पीछे हम जाएंगे, हम केस करने वाले हैं। तो वो कहेगा मैंने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो ऐसे पावर्टी वाले स्टेट में हम बात करेंगे अगर अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी। वो इस तरह नहीं हो सकता कि हम एक दिन में लेकर आएंगे और जिसमें मीडिया आएगी। और मीडिया से तो मेरी उम्मीदें बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ मीडिया के लिए, और मुझे फील हो रहा है कि वो लोग एक सर्टन एजेंडे के थ्रू काम करते हैं। अगर आप उस एजेंडे को फॉलो करते हैं, यू विल बी हाईलाइटेड। अगर आप नहीं करते तो आपको गिरा दिया जाएगा, आपकी बात को चुप कर दिया जाएगा। यहां तक कि मुझे कह दिया गया था कि आप आर्टिकल मत लिखा करें इस तरह, क्योंकि आप हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप तो उनकी पॉलिसी के खिलाफ लिख रहे हो। तो अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा? अगर आप बात नहीं करेंगे, मैं बात नहीं करूंगा, तो कौन करेंगे? वी टॉक दी टॉक बट वी वॉट, हम दी वॉक नहीं करते। हम बातें तो बहुत कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या हम बात करते हैं? क्या हम खड़े होते हैं जब मुसीबत आती है? तो सबसे पहले तो हमें स्कूल्स में रिफॉर्म लेकर आना है। स्कूल्स में रिफॉर्म कैसे आएगा? हर बच्चे को पता होना चाहिए कि डॉक्टर और नर्स में क्या फर्क है, टेक्नीशियन और डॉक्टर में क्या फर्क है, क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या फर्क है। उन्हें एजुकेट तो करें, उन बच्चों को तो समझाएं कि फर्स्ट, लाइक 1 to 5 वाले बच्चों को तो समझाएं क्लास में कि आप कर क्या रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे लगता है हमारे पास टैक्स ट्राइब्यूनल है, सर्विस ट्राइब्यूनल है, हेल्थ केयर ट्राइब्यूनल है हमारे पास। जब हेल्थ केयर के मसले आते हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल क्यों नहीं है? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? एक ऐसे जजेस क्यों नहीं है जो कि मेडिकल फील्ड पे समझते हो? एक बायो एथिक्स क्यों नहीं है? मेडिकल लॉ क्यों नहीं है? ये चीजें हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये एक डॉक्टर को क्यों नहीं पढ़ाई जाती? आप उठाए मेडिकल कोर्स में कहाँ आपको पढ़ाया जाता है कि बायो एथिक्स क्या है, मेडिकल लॉ क्या है, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे आप पे कौन कौन से पर्चे कट सकते हैं? नहीं, उस पर बात ही नहीं होती। उन्हें कहा जाता है कि आप तो इम्यून हो, आपने बस एक बार साइन ले लिए कागज पे कि हम, आप इस ऑपरेशन के बाद आपके पास जो भी होगा, आपके साथ जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल पेशेंट खुद है। तो बस वो तो मजे से घूम रहे हैं, वो तो एक कैंची उठाते हैं बस बीच में कॉल्स उठा रहे हैं। आप देखे, सिर्फ वीडियोस देखे तो ऑपरेशन के बीच में टिकटॉके बन रही है, ऑपरेशन के बीच में वीडियोस बन रही है, कोई यूट्यूब स्ट्रीम पर जा रहा है। लेकिन क्या वही डॉक्टर को आप पकड़ सकते हो? नहीं, वो तो कहता है आपने साइन किया हुआ है ना, हमने आपसे कंसेंट लेटर साइन किया हुआ है।
आपने लिखा हुआ है आपके साथ जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। अभी रिसेंटली मैं LRH में खड़ा था, पेशावर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां मैंने कहा है कि अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ब्लैक कोट पहना था तो मुझे कुर्सी मिली है, और जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ है कब से वो बीमार है, वो जमीन पे बैठा हुआ है। अब मैं उसे क्या कहूं कि पेशेंट मैं नहीं हूं, पेशेंट तो वो है, उसे कुर्सी पे बैठा हुआ यार। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं, हम बस यहाँ मैं अब भी शोरूम के कितनी ऑडियंस बैठी हुई है, वो सो चुकी है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। कितने लोग आए हुए हैं उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, कितने लोग आए हुए उन्हें क्या कहते हैं एक प्रॉपर वो चाहिए कि बस हमने एक सेशन अरेंज किया हम यहाँ बैठ गए। इनमें से कितने लोग बात करने वाले हैं, कितने रियलिटी पे बात करने वाले हैं? इसके बाद इस सेशन के बाद मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग चेंज लेकर आना चाहते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं बहुत सेशंस ज्वाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं बहुत इमोशनल हुआ, आज मैं बहुत खफा भी हूँ। मैं सिर्फ इसी बात पे खफा हूँ कि मैं जहां भी जाता हूँ सिर्फ बातें हो रही हैं। ये लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है? आज तक कोई किसी गांव में गया और वहां किसी कैंप में बैठा हुआ है कि उन बच्चों को समझाया है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है? हम जो आपको एक टीका 10 बच्चों को लगा रहे हैं वो जुल्म है? नहीं, कोई बात नहीं करता। मुझे इतना दुख हो रहा है, क्या वो हमारे बच्चे नहीं है? लाइक वो किसके बच्चे हैं? ये वो नेशन के बच्चे नहीं है। हम उन्हें से थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। और क्यों? क्योंकि वो गरीब है। आई गेस दैट्स इनफ, मेरी तरफ से काफी है। Thank you, Mr. Harris, for your response. I would now like to invite Mr. Shahid Ali Khan to deliver his presentation. Yusha, am I audible to you? Yes, sir. Thank you so much for having me. And we will try to understand basically the topic which has already been discussion from last 2 hours almost. So the topic is honoring the struggles against medical exploitation. And give me a minute. Let me sort out this matter. Sure. So from independence to digital age, we will try to understand basically what is the definition of medical exploitation, like overcharging, suggesting some not irregular medical, any kind of cure. If you're suggesting something, that's again part of your exploitation. Again, why it matters in Pakistan journey, that is very important, that everyone must try to understand that why this medical is important in case of Pakistan. And we will try to break up 3 different eras from 1947 to 70s, from 80s to 2000, and 2010 to 2025. So I'll go quite speedily because it has been so long, and the audience is also with us. They might not get bored. So the very important is, if I do talk about from 1947 to 1970s, like the post-independence health landscape, in initial timings, there was no as such hospital that was divided. There was no as such doctors. Like we were having shortage of doctors. We were having the issue of all the infrastructure. And then in case of controlling all the health facilities, the elite were controlling every health access within Pakistan from 70s, from 47 till 70s. And then if you do talk about the legal framework, there was no as such legal framework available for Pakistan's health, who could have an action or any kind of remedy for that one if someone commits any mistake in case of health. Because we have from 1973 onward, we have different 4 laws which are dealing with the health. And then public are largely unaware of their rights. This is very important, that we are not aware that which laws are very important for us to know regarding dealing with the health, and then what are important steps we need to take regarding the health and some other facilities which are basic health facilities in Pakistan. And then from 1980s to 2000, there were hospitals, but the reforms were quite slow, and there were quite new exploitations as well. Just like if you talk about the private hospital boom,
It was there from 1980s to 2000, because before that there was no as such private hospital that was owned by XYZ. But later on, the accessibility versus affordability, you cannot afford everyone in Pakistan, because there are almost 47% of Pakistanis who are living under poverty line. So they do not have an access to good facilities or a hospital which have lot of facilities. So there is a gap between accessibility and the affordability. So we need to mitigate that gap as well. So in case of medical procedures for the profit, there are so many ways that there is a rise in unnecessary medical procedure for the profit cause, that people are doctors are, I must say, doctors are suggesting their own preferred medical stores. They are preferring their own dedicated doctor kind of stuff. So there was again very weak regulation. There was no as such regulation which any like legal framework could take any action against any doctor because of their precautionary measurements which he has given to do, or some kind of drugs he has just suggested for a man or a female who is not feeling well. And because of that, if someone lose their life, there was no as such legal framework which was taking action against any doctor or medical staff. Then there were some of the over prescription of antibiotics as well. In case of drug regularity authority Pakistan, we do not have a lot of or above like drugs which are registered in Pakistan. If I do share the report of 2020, over 2,000 drugs that are not registered till now. And then before that, I mean, if I talk about 90s, 80s, above 30,000 drugs which were not registered with DREP. And then if I do talk about the 2010 to 2025, this is a digital age which is giving you a good chance and to take a help. And then we have all the social media tools which are, again, expose any kind of malpractice, which one of the panelists already had a talk here. And then very important is citizen journalism. If you think that something is happening, it's health, it's education, and whatever you think is happening in your community, which is against the ethics of your community, you can raise a voice. The device which you do have a phone with you, you are a journalist, and if you are using this device phone to have a talk, to raise a voice again any issue, you are doing a citizen journalism, and it must be under ethical practices. Remember, we do go live. Even Lahore High Court has banned to have an interview from XYZ who is reluctant to have an interview or reluctant to give you answers. You cannot put a mic into their mouth to get all the answers. So now, within the limits of ethics, you have to practice this citizen journalism. And then we have digital misinformation fueling miracle cures. We do have a lot of news which are helping us in cure any kind of disease, either it's suggested by XYZ doctors or not, or then we do even suggest get XYZ medicine you must use because I have been used in the past and might be they have a different symptoms, but we do. So in that case, digital media is helping us out to have citizen journalism. But in that case, we feel some kind of fake news as well, some kind of misinformation, some kind of disinformation, some kind of malinformation as well. If I do talk about the digital misinformation, is something that it is true, but in reality that is a fake one. It's health one, it's education one, it's any kind of announcement that you are doing on social media. If you don't know that it's fake, but you are dispersing that information on social media, that is basically digital misinformation. Deliberately, if you are doing that news or having that fake news on social media, and that is fake news, that is again a disinformation. And again, if you are practicing that fake news against anyone to damage the image of XYZ product or a person, you are basically going for the malinformation. So in this case, digital media is playing a vital role in helping you out to be a citizen journalism, as well as it's also playing a role in deliberating or in putting forward the fake news as well.